If you see, the capsule is very important chapter as far as your GPAT as well as Niper is concerned, and most of the time they used to ask more questions from capsule chapter in the Niper as well as GPAT also. Whatever important points are there in perspective of our GPAT Niper, that will be discussed. Not each and everything. I'm not going to cover each and everything, but whatever is important that will be discussed over here because I have to finish your syllabus. I'm taking in very short. So what do you mean by capsule? Capsule is also again a unit dosage form as like a tablet. Capsules are also a unit dosage form as like a tablet, but there is little bit difference. So capsule is nothing but the unit dosage form in which there is a drug itself alone or with the excipient. They are enclosed in an empty gelatin shell or empty cellulose cell. So depending upon the nature of that polymer, so unit dosage form in which drug alone or drug with excipient that is enclosed in an empty gelatin shell which is inert in nature. So that is nothing but the capsule. Now gelatin is an animal origin. Gelatin is often from animal origin, and other material like cellulose, then starch, then dextrans, they are obtained from natural sources. So you can call gelatin capsules as a non-vegetarian capsule, or the capsule made up of a cellulose or starch or the dextrins. So you can call them as a veg capsules. So gelatin is a non-veg capsule and cellulose is a veg capsule. So gelatin, what is the composition of capsules? What capsule are made of? So capsules are made up of a drug plus excipient plus inert outer capsule, and that capsule is made up of different polymers. So most of the time it is made up of gelatin and which is from animal origin. Composition, they are made up of from gelatin, they are made up from cellulose, methyl cellulose, then polyvinyl alcohol, denaturated gelatin from animal source. So if it is a made up of a gelatin, then it is known as a non-veg capsule, or if capsule is made up from your cellulose derivative or dextran or starch, then it is a veg capsule. Then capsules may contain small amount of other additives while manufacturing. See, when we were discussing the tablet, so most of the important part of tablet was drug excipient and their compression force, their stability, the drug excipient interaction, and that's why we have excipient interaction. Or because here you see, here there is no compression force involved, here there is no granulation, here there is no solvent involved. So you are just enclosing, you are just putting a drug with excipient, with or without excipient, in an empty capsule shell. So that's why it is uh, then excipient interaction is not much important over there, okay, in the capsule. And that's why this capsule is very simple dosage form, unit dosage form, solid unit dosage form. And you see there is a little bit interaction between drug and its empty gelatin capsule, means drug and its empty capsule, because most of the time these capsules are made up from either cellulose or gelatin and both are inert, okay. So that's why, and they are very simple and easy to handle dosage forms, easy to handle, you can easily swallow that capsule, okay. Then these capsules, see, if you take an example of tablet, for that you have to study the pre-formulation, then drug excipient flow properties and all that, and all each and everything, stability, etc, etc, okay. Drug excipient interaction and all that. But in case of capsule, you are just enclosing your drug with or without excipient. So there is no much things about the pre-formulation in the capsule. And remember one more thing, uh, when you are conducting any type of clinical trials, so the most convenient dosage form to use in the clinical trial is nothing but the capsule. Because see, here is no drug excipient interaction study you have to do, you are just putting your drug inside the empty gelatin capsule. So you can even use your drug as it is, API as it is, ठीक है. मान लीजिए कि आपको 50 मिलीग्राम एटेनॉल का टेस्ट करना है, तो 50 मिलीग्राम का एटेनॉल का कैप्सूल बना लिया आपने, तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, कैप्सूल इज इनर्ट, कैप्सूल के अंदर डाल दे रहे हो, तो दैट इज आल्सो कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज आल्सो palatable, that is also easy to handle, okay. And no much study has to be done during the formulation of capsule. So they are suitable dosage form for your clinical trials. Of course other dosage form also are used, for example injection and all that. But see, tablet में क्या होता है कि ड्रग और आपका जो भी ड्रग है उसके साथ जो एक्सपेंट्स है
various experiments, they are being compressed in a form of tablet. और compression force जो लगता है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होनी है. So that is a triggering factor for your drug excipient interaction. ठीक है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन फोर्स चेक करना है आपको, ड्रग का स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप ड्रग एनक्लोज कर रहे हो टैबलेट, सॉरी कैप्सूल में, और विच इज अ वेरी मच इनर्ट, मेड अप ऑफ इनर्ट मटेरियल. जो कैप्सूल का एम्प्टी जेलेटिन शेल होता है या फिर एम्प्टी सेलुलर शेल होता है वो कितना इनर्ट होता है. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म टू बी यूज्ड इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, रिमेंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट. Gelatin is obtained from irreversible hydrolytic extraction of the treated animal collagen, animal skin or animal bones. So gelatin is a it is nothing but the protein. It is a protein. It is obtained from animal source mostly. So it is obtained from skin or collagen or bones by hydrolysis, irreversible hydrolytic extraction. What we call it is. So it is obtained from collagen, animal bones, hide, frozen pork skin, etc. etc. Okay, again we will see. So gelatin is nothing but the protein. It is a heterogeneous product obtained by irreversible hydrolytic treated extraction treated animal collagen का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बाद में उसका जेलेटिन मिल जाएगा. इट इज नॉट ऑकरिंग नेचुरली, एज इट इज आपको जेलेटिन नहीं मिलेगा नेचुरल. जेलेटिन इज नॉट नेचुरल प्रोडक्ट, it is a hydrolytic product of your bones and skin. Okay, so common source of this gelatin is nothing but the animal bones, hide portion and frozen pork skin. ठीक है, जो आपका मतलब वही नॉन वेज. Now there are two types of gelatin. Okay, so when you try to manufacture a gelatin from your bones and skin, so you will get two kind of gelatin. So depending upon the process, so type A gelatin and type B gelatin. Now it is very important for your GPAT Niper as well as other exams. Okay, so type A gelatin is known as acid treated gelatin. Type A gelatin is a acid treated, A for acid, you can remember. Type A is a acid treated. Now it has a आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अराउंड 9. कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कितना है 9, मतलब पीएच 9 के जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है उसका क्या मतलब है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. सो पीएच एट विच देयर इज अ कोएगुलेशन. ठीक है, सो ये आता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 9 उसका. ओके, इसका एसिड ट्रीटेड है टाइप ए जेलेटिन, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है इसका 9 एंड इट इज नथिंग बट द मेड अप फ्रॉम ए ब्लेंड ऑफ बोन एंड pork skin. ओके, सो उसका ही होता है. Now, bones and pork skin with high gel strength, they are selected for the hard gelatin capsule production. Okay, bones and pork skin with the high gel strength, they are used for production of this hard gelatin capsule MT. Okay, remember type A gelatin is acid treated and it will have isolated pH of 9. Now type B gelatin. Type B gelatin is a alkali treated, A for acid, B for base. Okay, likewise you can remember type B means alkali treated. Now it will have isoelectric pH at 4.7. So remember this is already question asked in a lot of times in the Niper as well as GPAT. ये टाइप ए के आइसोलेटेड पीएच क्या होता है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे. So type B का क्या होता है 4.7. Now it is alkali treated. It is obtained from green bones, green fresh bones. Okay, that are used for the production of type B gelatin. So इसका याद रखो कि type A acid treated होता है, उसका isolated pH होता है 7 to 9 होता है actually. Okay, then it is obtained from a mixture of blend of bone and pork skin. आप बोन यहाँ से हटा दो, आप इतना याद रखोगे ये टाइप ए जेलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पोर्क स्किन. ओके, विद हाई जेल स्ट्रेंथ. ठीक है, एंड टाइप बी इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन बोन्स. कि इसका टाइप ए का सोर्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका पीएच क्या है, ये याद रखना है आपको. कैसे भी याद रखो आप देख लो. ओके, नाउ टाइप ए टाइप बी जेलेटिन. टाइप बी इज एसिडेटेड पीएच 9 obtained from skin. Type B alkali treated pH 4.7 obtained from bones, green and fresh bones. ठीक है,
Now next one is bloom strength or gel strength. So whatever gelatin you are getting, आपने जो भी gelatin obtain किया, आपने जो भी gelatin manufacture किया, तो उसका quality क्या है? So what is the quality of gelatin is decided by your bloom strength, or it is also known as gel strength or gelling strength. इसके बारे में 100% क्वेश्चन आता है ना यहाँ पर में, ठीक है? So bloom strength is also known as gel strength, and okay, so that is one of the quality. आपने अगर मैन्युफैक्चर किया हो जेलेटिन, उसके बाद में कैसा बना, क्या बना, उसका क्वालिटी चेक्स क्या है. सो वट एवर द क्वालिटी चेक्स ऑफ gelatin is no, they are nothing but the bloom strength, or it is also known as gel strength. And second one is the viscosity of that gelatin, and third one is the iron content of that gelatin. Okay, you will tell why iron. ठीक है? So see, iron is a normally it occurs as a impurity in the gelatin. ठीक है? जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हो कहाँ पे करेंगे? आयरन के पैन में ही करेंगे ना, या फिर है ना, आयरन के पैन में करेंगे. तो उसमें आयरन जो है एज ए इम्प्योरिटी आता है किसमें? जेलेटिन में. So their limit has specified by USP, and you have to go according with that limit only. So whatever gelatin you have manufacturing, so it should be within the limit of gel strength, bloom strength, viscosity, or iron content. Now okay, we will see one by one. This part is very important. Now, so gelatin, how you can obtain a gelatin? For example, a dry bone is there, so you have to treat with the acid for 10 to 15 days. After that, you have to remove the acid, treat with the lime, okay, and then remove the lime. Lime means alkali, then adjust the pH. So likewise that you can obtain from dry bone, then calf skin, जो ये होते हैं गाय गाय मसीज भैंस बैल जो होते हैं उनके स्किन से, then pork skin. ठीक है, उसको वॉश करो, लाइम से ट्रीट करो, एसिड ट्रीटेड, बेस ट्रीटेड. ये देखो ये एसिड है यहाँ पे बेस है. उसके बाद में उसको वॉश करके पीएच एडजस्ट करो उसका, बाद में आपको मिल जाएगा क्या? जेलेटिन. ड्राई मिल करो उसको. सो दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ जेलेटिन इज देयर. हाउ टू मेक जेलेटिन. Okay, so process of manufacture of gelatin used in the capsule. Now this gelatin is used for making a empty gelatin capsule. Okay, empty gelatin capsule ये बनाएंगे, उसके बाद में आप अपना ड्रग उसमें फिल करेंगे, तो उसको बन जाएगा कैप्सूल डोसेज फॉर्म. ऐसा नहीं कि कैप्सूल ये बन गया मतलब कैप्सूल बन गया, ऐसा नहीं. इट इज जस्ट अ पॉलीमर, इट इज जस्ट योर प्रोटीन. Okay, so gelatin is nothing but your protein. Okay, it is obtained from dry bone, pork skin or calf skin. आपको ये मालूम होना चाहिए. Just procedure not much important. Just try to remember. Acid, there are two types of gelatin: type A gelatin, type B gelatin. So type A is obtained from pork skin. Type B is obtained from green bones. Type A is nothing but the acid treated. Type B is nothing but the base treated. Type A will have an isolated pH of 9. Type B will have an isolated pH of 4.7. So this information is very important. You have to remember it. Now next, now we are seeing the bloom strength. Okay, first parameter for your gelatin is a bloom strength. Now what is bloom strength? It is also known as gel strength. It is also known as gel strength. Remember, try to focus on the cursor position of my mouse. So it is a bloom strength or gel strength. So it is measured by one instrument known as a bloom gelometer. ओके, ये नाइपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं नाइपर में. सो जेलेटिन का जो ब्लूम स्ट्रेंथ है और जेल स्ट्रेंथ है वो मेजर करते हैं अपन ब्लूम जेलोमीटर से. ओके, इट इज मेजर्ड बाय ब्लूम जेलोमीटर. ओके, नाउ what do we mean by bloom? What it indicates? So bloom strength, it is nothing but it indicates the cross linking of gelatin molecules. ठीक है, so gelatin is nothing but the polymer. Okay, polymer of protein. ठीक है, जो प्रोटीन है आपका, तो number of molecules are there in that. So it is a actually it is a tertiary structure. Gelatin is a tertiary structure of protein. Okay, so the bloom strength will indicate the cross linking, how much cross linking is there in the gelatin molecule. तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और वो पॉलीमर बनता है, एक लीनियर पॉलीमर. ठीक है, लेकिन बहुत सारा जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो लीनियर पॉलीमर्स एक में एक के साथ क्रॉस लिंक होके फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग. सो इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन. So what is a bloom strength? Bloom strength will indicate the strength of your
cross linking in the gelatin molecule and its molecular weight. Remember, so gel strength होगा, gel strength or Bloom strength, it is measured by Bloom gelometer. Now second point, how you have to perform this test. So gel strength or Bloom strength is performed on a 6.66% of a solution. Gelatin का solution बनाना आपको 6.66% weight by volume in the water, okay, at 10 degrees Celsius for 17 hours. उसको रखना है. Now it will become a gel. Okay, it will become a gel. अब जब solution बनाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तभी तो आप जेलेटिन का सोल्यूशन बना सकते हो. बाद में क्या करना है, उसका टेम्परेचर कम करना है और 17 आवर्स के लिए रखना है. नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द, यू हैव टू मेजर द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ दैट जेलेटिन. नाउ it is measured by force required to remove a plastic plunger in the solution. So ये क्या होता है, इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं बाद में बोलता हूँ या फिर आप बुक में से पढ़ लेना. So force required to remove a plastic plunger from a gelatin solution or gelatin gel. So that is the Bloom strength. Okay, so ideally the Bloom strength of gelatin should be within the range. It should be within the 150 to 250 grams. Okay, so whatever gelatin you are making, so it should have a Bloom strength between this range. Okay, 150 to 250 grams. Okay, this is also one of the important point. Okay, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, it is performed 6.66% weight by volume solution of gelatin at 10 degrees Celsius 17 hours. Okay, that is the force required to remove the plastic plunger from the solution. And ideally it should have a Bloom strength in a range of 150 to 250 grams. Okay, now this Bloom strength, why I am giving much emphasis on this Bloom strength, because the most of the time in the Niper as well as GPAT they used to ask question on this, and you should be clear about this at this point only. Okay, then the cost of gelatin is because of only Bloom strength. Higher will be the Bloom strength of gelatin, higher will be the cost of gelatin. So जो आपका हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसका ब्लूम स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और जो आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसका ब्लूम स्ट्रेंथ कम होता है. Now, for example, there are two types of gelatin. Now, type A gelatin will have Bloom strength of 240 to 300. Type B will have gelatin of Bloom strength of 200 to 250. ये याद रखो आप कि टाइप 1 का कितना ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, टाइप 2 का कितना ब्लूम स्ट्रेंथ होता है. सो टाइप ए जेलेटिन विल हैव ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ 240 to 300 grams. Then type B gelatin will have a bloom strength of 200 to 250. Okay, are you getting or not? Is that clear? Are you getting or not? Yeah. Now next parameter is the source and isoelectric pH. Also I already stated regarding this in the previous slide, but still I will repeat. So source and isoelectric pH. So type A gelatin is obtained from pork skin. It is acid treated and you will have isoelectric pH in a range of 7 to 9. Then second, type B gelatin is it is obtained from fresh green bones. It is alkali treated or base treated. Then it will have isoelectric pH of 4.7 to 4.7 to 5. That is isoelectric pH. So you have to remember this. Okay. So A for acid, B for base. Type A means acid treated, B means base treated. Okay. Now viscosity, second parameter, viscosity. So what viscosity will indicate? It will indicate the length of molecular chain in the gelatin. कि molecular chain कितना लंबा है, कितना लेंथ है उसका. तो that is viscosity is the indicator of molecular chain length in the gelatin. इसका भी याद रखो. And normally your gelatin will have viscosity in between 25 to 45 millipoise. Okay. Then next parameter is iron content. As I have told you, iron will be the impurity during the manufacturing of your gelatin. जैसे gelatin आप मैन्युफैक्चर करते हो उसमें आयरन impurity आता ही आता है, ठीक है. So it should be within the limit. It should be not more than 15 ppm. इसके बारे में भी क्वेश्चंस 100% पूछते हैं. So 15 ppm, okay, याद रखो. So iron content should not be more than 15 ppm. Now क्यों, मतलब क्यों करना है आयरन कंटेंट का?
सपोज दैट मान लीजिए कि आपके जेटिन है, आपने बनाया और उसमें आयरन कंटेंट का कुछ ध्यान ही नहीं दिया आपने, सो इट इज बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। सो मान लीजिए उस पर 50 ppm में 200 ppm में, तो क्या होगा उसका? सो यू आर सी वट एवर यू आर जिल्टिंग, यू आर प्रिपेयरिंग, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर to make the empty gelatin capsule, and after that making empty gelatin capsule, you are going to fill that capsule by drug. Okay, so if suppose that you got a drug which will extract the iron content, which will extract the iron. Okay, suppose that you are making a tetracycline capsules. अगर टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल बनाना है आपको, टेट्रासाइक्लिन का, और आपको ये मालूम है कि टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, जो मेटल्स आयन होते हैं, मेटालिक आयन होते हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और मतलब उसका absorption नहीं होता बाद में। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल बनाया और आपके कैप्सूल का एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल जो है उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो, और वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, एक ही होगा। दूसरा क्या होता है कि दोज ड्रग्स विच एक्सट्रैक्ट द आयरन, they will react with the iron present in the empty gelatin capsule and they will form a black spot on the your empty gelatin capsule, ठीक है। जो कैप्सूल शेल होता है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे, अगर ड्रग का और आयरन का रिएक्शन हो गया उसमें, तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आता है। so because of that your iron content of empty gelatin capsule should be in the within the range, within the range, okay, so within the, not, it should be not more than the 15 ppm, ये याद रखो। Next, okay, let's talk about the bloom strength again. So higher the bloom strength, higher will be the physical stability of gelatin. अगर कोई gelatin का bloom strength ज़्यादा है तो उसका physical stability जो है वो ज़्यादा रहता है. That's why bloom strength is a measure of cost of gelatin. जिसका ज़्यादा gelatin का bloom strength होगा उतना ज़्यादा cost होगा. So it is a measure of cohesive strength. It is a measure of cohesive strength and cross-linking that occurs between the gelatin molecule. What is bloom strength? It is a measure of cohesive force of gelatin molecule or cross-linking that occurs in the gelatin molecule. Okay, so that is nothing but the bloom strength, and this bloom strength is a proportional to the molecular weight of gelatin. इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. So bloom strength is a proportional to the molecular weight of gelatin. As molecular weight of gelatin is high, so it will have high bloom strength. Or if you have gelatin with high bloom strength, that means you are having a high molecular weight gelatin. Okay, then bloom strength is calculated by measuring the weight in grams required to move a plastic plunger. उसका dimension दिया है यहाँ पे 4.5 inches in the diameter and 4 mm in the deep from 66.6 6 point जो solution बताया था वो उतना ही solution है 6 into 2 by 3, that is 6.67, and has been held at 10 degrees Celsius for 17 hours, वही उतना है. Now the cost of gelatin is directly proportional to the bloom strength, ये भी याद रखो. Now viscosity of gelatin is measured at a 60 degrees Celsius by 6% solution in the water, at that is the indicator of your molecular chain length in the gelatin. कि molecular chain length कितना है gelatin में, वो कौन दर्शाता है आपका viscosity. molecular weight कौन दर्शाता है, bloom strength, याद रखो. Viscosity range कितना होता है normally your gelatin should have viscosity range in the 25 to 45 millipose, ठीक है, ये normal range होना चाहिए उसका. But most of the manufacturer they used to keep a viscosity of gelatin in the 38 point plus minus 38 plus minus 2 centipoise because of if they want a specific type of gelatin. Okay, then low viscosity gelatin, that is a viscosity of gelatin if it is a 25 to 32 millipoise. Low viscosity gelatin, that is a higher bloom strength. Low viscosity means high bloom strength. Okay, high bloom strength gelatin is used for the capsulation of hygroscopic vehicle for solid, hygroscopic material or vehicle for solid. Low viscosity and high bloom strength, याद रखो. Now iron is present as an impurity in the during the manufacturing of each gelatin, and it should be within the limit. It should not be more than 15 ppm. ये याद रखो आप, ये 2-3 बार हो चुका है अभी. Now solubility limit for empty gelatin capsule. So water resistance. So your gelatin should not dissolve in the water at 20
20 to 30 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट, मतलब उससे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए डिजोल्व होने के लिए. सो योर कैप्सूल शेल शुड नॉट डिजोल्व इन द वाटर in 15 minutes. It should take more than 15 minutes. Okay. Then acid solubility. Your gelatin should be dissolved in the acid within the 5 minutes. It should get dissolved in the less than 5 minutes in 0.5% HCl at a temperature 36-38. कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व होना चाहिए आपका जेलेटिन विद इन द 5 मिनट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. ठीक है. कैसे बनाएंगे आप एम्प्टी कैप्सूल? Centrifugation and centrifugal casting method is there one. Then dip pin method is there. So dip pin method is mostly used commercial scale. So you remember the manufacturing of empty gelatin capsule shell hard gelatin, so that is made by dip pin method. Dip pin method is most commonly used for commercial production of hard gelatin capsule. I am talking about the empty hard gelatin capsule. Okay, dip pin method. So another method is there, centrifugal and casting method. Then okay, so these two methods are there, but this dip in method is mostly commercially used. Okay, याद रखो. Now in this dip in method there are different steps involved in the ठीक है. इसमें क्या होता है, मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स. सो देयर हैज अ मोल्ड्स, पिन जो होता है ना, पिन के जैसे मोल्ड होते हैं. तो आपको क्या करना पड़ता है, हिंदी में बोलता हूँ, आपको जेलेटिन का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है. और जेलेटिन का सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर जब वो लिक्विड रहेगा, ठीक है. और जो भी मोल्ड्स होते हैं वो मोल्ड्स जो है ना, वो क्या करने का, उसमें वो सॉल्यूशन में डिप करने का. और डिप करने के बाद अंदर जो मोल्ड्स है, मोल्ड्स के अंदर मतलब लो टेम्परेचर सर्कुलेशन होता है. और वो जैसे डिप करके बाहर निकलता है, तो जो भी जेलेटिन उसको adhere हो चुका है जेलेटिन का सॉल्यूशन, that will take a shape of that pin. And pin that pin or mold is circulated inside it is circulated with the low temperature, so there will be solidification of that gelatin and they will take a shape of that pin. Okay, now there is a formation of body and body and cap at that pin. And after that you have to trim it, you have to cut it to get a desired size of your capsule. Okay, so steps in the preparation of empty gelatin capsule: dipping, spinning, drying, trimming and joining. These are the all automatic steps in the machine only. If you want to read more on this, you can read from Leon Lackman. Okay, so it is given in there, but I think it is not much important. Then main advantage of capsule over tablets. What is main advantage of capsule over tablet? So first it will mask the taste. It will mask the taste and odor. Okay, जो भी आपका ड्रग है उसका टेस्ट मास्क करेगा, odor मास्क करेगा, because your drug is enclosed in the capsule. Okay, empty gelatin capsule or empty cellulose capsule. Second advantage, okay, second advantage, इट लुक लाइक ए ब्यूटीफुल एलिगेंस. ओके, अब देखो कैप्सूल आप देखेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगता है देन टैबलेट. ठीक है. अगर आपका कोई ड्रग है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो वैसे आप ले नहीं सकते, उसको दिखने में ही गंदा लगता है वो, और आप लेंगे कैसे उसको. सो यू जस्ट एनक्लोज दैट ड्रग इन अ कैप्सूल, सो यू कैन इजीली टेक. So ease of use, then palatability. So these are the some few advantages, not much important for the exam. Then capsule, few important points from capsule. Okay, so hard gelatin capsule is not highly, okay, hard gelatin, these points are important about regarding, these points are regarding a hard gelatin capsule. So hard gelatin capsule important points: they are not used for highly soluble material. Hard gelatin capsule you cannot use for a highly soluble material, because they used to cause irritation to the your empty gelatin capsule and it can break. Okay, so for example, potassium chloride, potassium bromide, ammonium chloride, then iodine. So these kind of material you cannot enclose in the empty gelatin capsule. So these are highly soluble material and they can cause erosion or corrosion of your empty gelatin capsule. So you cannot you formulate these kind of salts in the empty gelatin capsule. Remember KCl, KBr, NH4Cl and I. मतलब potassium chloride, potassium bromide,
ammonium chloride and iodine. If you want to, please, I have in a very first lecture I was telling you that you should take a paper and pen and please try to make a notes from lecture जितना भी हो सके उतना, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जो नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं है। अभी ये इसमें का बहुत सारा कंटेंट बुक में नहीं है जो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ये आज ही निकला है मैंने ऐसा, ठीक है। So again, so hard gelatin capsule also they are not used for highly efflorescent material which will leave the water. Okay, so efflorescent material you can which will release the water of molecule, okay, water of crystallization means for example your caffeine के लिए यूज नहीं कर सकते हो आप कैप्सूल, ठीक है। So caffeine is a efflorescent material, it will release the water molecule of crystallization. So you cannot use hard gelatin capsule for efflorescent material which will soften the shell, means it will soften the shell, it will वो नरम करेगा, जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसको नरम कर देगा वो, ठीक है, बिकॉज द मॉलिक्यूल विल रिलीज द वाटर, सो दैट इज इफ्लोरेसेंट, ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ नॉट यूज फॉर हाईली डेलिक्विसेंट मटेरियल, ओके, व्हिच विल कॉज ब्रिटलनेस ऑफ सेल, मींस those molecules or those drug which will absorb the water molecule from the environment and become a liquid, that is nothing but the deliquescent. So you cannot use these kind of material to formulate a capsule. अगर ये ड्रग होगा तो कैप्सूल फॉर्म छोड़ दो, दूसरा कोई बनाओ, ठीक है। मतलब क्या होगा कि डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस अगर होगा तो दैट विल एब्सॉर्ब ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम योर एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल शेल आल्सो, ओके, सो योर शेल विल बिकम ब्रिटल, so there is a certain amount of moisture present in the shell, okay, that will make the shell flexible. But if your drug is able to absorb that moisture also, then it will become a brittle. So you cannot use hard gelatin capsule dosage form for these kind of material like highly soluble material, then efflorescent material or deliquescent material, okay, remember। now capsules are mainly of two types, ये हमने ऑलरेडी देखा है, बट फिर से मैं बोलता हूँ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ओके। नाउ दिस हार्ड जेलेटिन कैप्सूल दे आर मोस्टली यूज्ड टू एनक्लोज द पाउडर पेलेट्स ग्रैन्यूल्स, ओके, कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में क्या रहेगा, आप एक तो उसमें आपको पाउडर मिलेगा, ठीक है, ड्रग का और एक्सपेंट का, उसके बाद में हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में आप पेलेट्स भी यूज कर सकते हो, पेलेट्स आर नथिंग बट द दीज आर नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, ओके, पेलेट्स, देन अगेन आप ग्रैन्यूल्स भी डाल सकते हो उसमें, okay, so hard gelatin capsule mein, so here during the manufacturing process of this hard gelatin capsule or filling process, so each and every step is separate, okay, means manufacturing or formation of hard gelatin capsule is different step, okay, then filling of hard gelatin capsule is another step, then sealing of this capsule is another step. So during the process of hard gelatin capsule, each and every process are single or separate, okay, remember. But nowadays this gelatin hard gelatin capsule, normally what happens, normally it is used to enclose or encapsulate the powders, pellets or granules, not for liquid, okay. But nowadays by certain modification this hard gelatin by the certain modification this hard gelatin capsule can be made to enclose the liquid also, okay. Then next one is soft gelatin capsule. So as now name indicate, soft means क्या, सो इट इज अ फ्लेक्सिबल देन दिस हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड मतलब हार्ड, उसको आप दूसरे शेप में नहीं मोड़ सकते, ओके, दैट विल बी हार्ड। सॉफ्ट जेलेटिन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल मींस दे आर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ प्लास्टिसाइज्ड जेलेटिन, कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें ज्यादा प्लास्टिसाइजर का यूज होता है, सो दैट प्लास्टिसाइजर मेक this gelatin soft, and that's why it is a soft gelatin capsule, okay। now this soft gelatin capsule they are used to enclose the liquid, they are used to enclose the liquid, okay, but that liquid should not dissolve the capsule shell, कि मतलब आपका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में लिक्विड एनक्लोज करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो बहुत सारे ये आता है ना कफ की गोली, जैसे कफ कैप्सूल्स, so they are made of soft gelatin capsule. Then again, if you I don't know whether you have seen the vitamin E capsule, so if you have seen vitamin E capsule, Evion, the brand name is Evion, so it is also a soft gelatin capsule, okay। अगेन आपका जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेप होता है, जैसे क्लोरमफेनिकोल, सो अगर आपको मालूम है क्लोरमफेनिकोल एप्लीकेप, अगर आपके आँख में इन्फेक्शन हो गया तो उसका यूज करते हैं, ठीक है।
So that is also soft gelatin capsule. Then if another example is there, so cod liver oil or shark liver oil. So whatever tablets, whatever capsules are there which consists of cod liver oil or shark liver oil, so that is also empty gelatin capsule. So in that cod liver oil is there or shark liver oil is there, that means liquid is enclosed in the that soft gelatin capsule. Okay, so hard gelatin capsule is mainly for powders, granules and pellets. Soft gelatin capsule is for liquid. Okay, remember. But during the manufacturing of this soft gelatin capsule, all the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर सिंगल स्टेप, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होगा कि जेल्टिन का शेल भी ऑटोमेटिक बनेगा, उसमें साइमल्टेनियसली उसमें क्या करेगा, उसमें साइमल्टेनियसली आपका लिक्विड भी ड्रॉप होगा और फिलिंग सीलिंग सब एक ही प्रोसेस है, मतलब देर इज नो सेपरेट प्रोसेस लाइक दैट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में क्या होता है कि आपको पहले एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल बनाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो फिर उसमें पाउडर फिल करना पड़ता है, पेलेट फिल करना पड़ता है, दैट इज फिलिंग इज अनदर, फॉर्मेशन इज अनदर स्टेप, फिलिंग इज अनदर स्टेप, सीलिंग इज अनदर स्टेप। ओके, but that doesn't happen with the soft gelatin capsule. In the case of soft gelatin capsule, all the process are a one step process. Okay, so for example, they are made by plate process or rotary die process. प्लेट प्रोसेस एक होता है और रोटरी डाई प्रोसेस एक होता है। तो रोटरी डाई प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ओके, आप बुक में से भी देख सकते हो या फिर मैं भी दिखा। सो रोटरी डाई प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि two gelatin sheets will come together simultaneously, there will be formation of gelatin and sheets will be formed and your liquid will be dropped specific amount of liquid and you will get a soft gelatin capsule. So here in case of soft gelatin capsule, formation, filling and sealing is only one process. Now next, plasticizers used in the soft gelatin capsule. Okay, plasticizers used in the soft gelatin capsule to make gelatin as a soft. The ratio weight by weight of dry plasticizer to the dry gelatin will measure or will determine the hardness of gelatin cell. कि आपका gelatin cell कितना hard होगा वो कौन करेगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा। So the ratio of dry plasticizer to the dry gelatin. Okay, so ratio weight by weight dry plasticizer to the dry gelatin will determine the hardness of gelatin cell. Okay, so it is a measure of hardness. Common plasticizer used in the soft gelatin capsule, they are nothing but the glycerine, then sorbitol, okay, polyethylene glycol. So इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So plasticizer used in the capsule, so that is a glycerine, sorbitol, polyethylene glycol. All these are the plasticizers used in the soft gelatin capsule. Remember, okay. So officially glycerine is available, sorbitol is available, polyethylene glycol is also available. Now we'll see. Okay, so depending upon the hardness of capsules are classified empty. I'm talking about again. I'm talking about the empty capsules. Okay, अपन ने यहाँ तक ड्रग भरा ही नहीं उसमें, ये सब empty है, ठीक है। So empty capsule. So depending upon the hardness, they are classified into three types: hard capsules, medium capsule, and soft capsules. So hard capsule will have a dry. अभी देखो ये बंदा कब आ गया, इसको अवार्ड देना पड़ेगा। चलो जानो, बंदी है। Okay, so depending upon the hardness of capsule, they are classified into three types. That is a hard capsule, medium capsule, and soft capsule. Okay, so hard capsule will have a ratio of dry glycerin to the dry gelatin. Okay, so it will have a ratio of 0.4 to 1, and they are used for oral, then oil-based material, then shell softening material. Okay, so hard gelatin type capsule is used for oral, oil based material, then shell softening material, and if the area is humid, so in that case you have to formulate hard gelatin capsule. अगर जो humid area होता है उसमें hard gelatin capsule use करेंगे, ठीक है। Now next one is a medium hard capsule. So in that you will have a G ratio, means G to G ratio, glycerin to gelatin ratio. So 0.6 to 1, and it is used for oral, then
uh, then vaginal oil based material, water miscible or shell hardening material. And this type of capsule, medium hardness capsule, was used for temperate areas. For humid areas, hard gelatin capsule is used. And last one is soft gelatin. So in this case, soft gelatin will have a ratio of dry glycerin to the dry gelatin 0.8 to 1. Again, it is used for oral vaginal oil based material, water based miscible material, then shell hardening material. Or this soft gelatin is primarily meant for storage in the meant for the कोल्ड एंड ड्राई एरियाज. अगर जहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई वेदर है वहाँ पे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आपको स्टेबिलिटी देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. जहाँ पे टेम्परेट एरिया है वहाँ पे मीडियम हार्डनेस का कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं. जहाँ पे ह्यूमिड एरियाज है वहाँ पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आपको यूज करना पड़ेगा. नो एडिशनल कंपोनेंट फॉर जेलेटिन मास. कि जेलेटिन का कैप्सूल जो जेलेटिन बनाया आपने वो तो है ठीक है कैप्सूल, लेकिन उसमें अगर आपको कलर डालना है, उसमें अगर आपको कुछ प्रिंटिंग करना है उसके ऊपर आपको अगर कोई उसमें कोई फ्लेवर डालना है, तो ये एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल के एडजॉइंट्स है और कंपोनेंट्स है. सो एडिशनल कंपोनेंट फॉर gelatin mass. Okay, additional component for gelatin mass. So if you want to, देखो नॉर्मली क्या होता है, जेलेटिन अगर आपने बनाया उसमें कोई कलर नहीं यूज किया तो उसका जो कैप्सूल बनेगा वो ओपेक बनेगा, मतलब लिटिल बिट एकदम ट्रांसपेरेंट बनेगा, येलोइश कलर का ट्रांसपेरेंट बनेगा. लेकिन that will not look like a good. So if you add a green, if you add a red color, और if you most of the time हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में देखो आप रेड एंड ब्लैक कलर कॉमन होता है, व्हाइट कलर एंड रेड कलर कॉमन होता है. सो यू कैन ऐड द कलर टू द that empty gelatin capsule. So those are nothing but the adjuvants. So what are these? First is the methyl paraben, propyl paraben, category 1. So adjuvants are also divided into categories. Category 1 and category 2. Category 1, first methyl paraben, propyl paraben. As their name indicates, they are nothing but the preservative. So they are used in the 0.2% concentration. They will act as a preservative. Then food, drug and cosmetic dyes, lakes, okay, coloring agents. So FD and C, drug and dyes and colors, water soluble dyes, certified lakes, pigments and vegetable colors, either alone or in a combination. Okay, so they are nothing but the coloring agent. Then titanium dioxide is added in the empty gelatin capsule in a concentration of 0.2 to 1.2% as a opacifying agent. मतलब जितना हो सके उतना ओपिसिफाई करेगा, उसको व्हाइट करेगा. इथाइल वैनिलीन एज द नेम इंडिकेट, वैनिलीन मींस वैनिला फ्लेवर का आना चाहिए आपके सामने. सो इथाइल वैनिलीन मींस, so it is a flavoring agent and taste improvement. So it is used in the 0.1%. Again, essential oils. Essential oil means volatile oil obtained from various flowers or various, उसकी वजह से जैसे आपका सिनेमन ऑयल हो गया, जैसे आपका अनीस ऑयल हो गया, जैसे आपका कोरिएंडर, जैसे आपका तिल ऑयल हो गया. So these are nothing but the essential oils. They are also used as a flavoring agent and taste to modify the empty gelatin capsule. Category second, sucrose is there. So you can use up to 5% sucrose weight by weight to produce chewable shell and taste. मतलब अगर आपको कैप्सूल मतलब है ना, च्यूएबल टेबलेट होता है, वैसे च्यूएबल कैप्सूल्स भी होता है. ठीक है, तो एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल में आप ये मतलब जेलेटिन का बनाते समय अगर सुक्रोज डाला उसमें तो आप च्यू भी कर सकते हो उसको, आपको स्वीट भी लगेगा और जेलेटिन धीरे धीरे डिसॉल्व भी होगा आपके सलाइवा में. To produce chewable shell and taste, it is very important. That's why I am repeating. Sucrose is used to produce the chewable shells and taste, increase the taste. It can be used up to 5%. Then next one is a fumaric acid. Fumaric acid will increase the solubility of gelatin and reduce the aldehyde tanning of gelatin. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है फ्यूमरिक एसिड. It will increase the solubility and it will reduce the aldehyde tanning of gelatin. याद रखो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है जीपैट नाइपर, बट इट इज इम्पोर्टेंट. ये जेलेटिन फ्यूमरिक एसिड वाला इम्पोर्टेंट है, सुक्रोज इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बाद में टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, moisture content of hard gelatin capsule should be within the limit. So moisture content should be around 12 to 15%. ठीक है, मैंने बोला था it will have a certain amount of moisture. So that is nothing but the 12 to 15%. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. Okay, so
बिलो द 10% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल विल बिकम ब्रिटल। अगर बहुत ज्यादा कम है मॉइस्चर कंटेंट 10% से कम है तो दैट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल विल बिकम ब्रिटल, इजीली इट कैन बी ब्रोकन डाउन, टूट जाएगा, ठीक है। एंड देयर विल बी डायमेंशनल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर आल्सो। सो इफ मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 10%, your empty capsule will become brittle and it will have also dimensional changes in the structure. If moisture content is above 16%, if it is more than 16%, then it will lose the mechanical strength. It will become a it will become like a soft. So it will lose the mechanical strength and will cause problem during the filling. So handling range in the मतलब हैंडलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन कितना होना चाहिए हार्ड जेलिंग के लिए। सो हैंडलिंग रेंज फॉर एम्प्टी कैप्सूल इज नथिंग बट 30 to 45% of relative humidity. That's why in the manufacturing area you will easily see so humidity condition is controlled over there. So if it is a particularly if it is a capsule manufacturing area, then there are certain gliders that are also used while to improve the flow of powder from hopper to the machine. Okay, so glycol esters are used, silicon dioxide, metallic stearate, then stearic acid and talc. Then quality control test for gelatin capsule. मतलब जो अब आपका फिलिंग जो है, मैं बोलता हूँ बाद में फिलिंग के बारे में सब कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नाम और किसके लिए यूज़ करते हैं वो बोलूँगा, ठीक है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल वेट वेरिएशन। सो फॉर weight variation you have to take a 20 intact capsule and you have to calculate the average weight of capsule, and the every each capsule should be within the limit. It should not be less than 90% and not more than 110% of average weight. इसके रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए कि आपको 20 कैप्सूल लेना है, उसका एवरेज वेट निकालना है, मतलब 1 बाय 1 आपको एक बाय एक टैबलेट मेजर करना है। ओके, अगर आप कॉलेज के लैब में कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उतना डिजिटल बैलेंस नहीं होगा उतना जबरदस्त, ठीक है। मेटलर टाइप का बैलेंस नहीं होगा, इंडस्ट्री में मेटलर बैलेंस होता है, मेटलर, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें अगर जैसे वेट करते हो वो ऑटोमेटिकली याद रखता है वेट, मतलब वेट किया आपने एंटर किया तो वो प्रिंट आता है, प्रिंट में वो वेट दिखाएगा, ठीक है। बाद में दूसरा ले लो टैबलेट रखो, कैप्सूल रखो, उसका वेट, सो 20 कैप्सूल का वेट करेंगे और बाद में उसका एवरेज भी निकलता है वो, और एवरेज वेट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वही होता है प्रिंट। तो लैब में आपको एक बाय एक रखना है, उसके बाद लिख के एक लिखना है, ऐसा 20 का लिखना पड़ेगा, बाद में सबका एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 20 आपको एवरेज वेट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल एंड रिस्पेक्टिव परसेंट डेविएशन अलॉटेड एज पर द वेट वेरिएशन टेस्ट, ये ऑफिशियल होता है, ठीक है। सो इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल इज लेस देन 300 milligram, then 10% deviation can be accepted. If average weight of tablet is more than average weight of capsule is more than 300 mg, so or more 300 mg और more, मतलब आपकी कैप्सूल का वेट 300 मिलीग्राम है और ज़्यादा है तो 7.5% डेविएशन कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो। सो वेट वेरिएशन क्या है, कितना टेस्ट है वेट वेरिएशन का। इफ योर कैप्सूल इज लेस देन 300 milligram weight, then 10% deviation is allowed, and if it is more than 300 mg or 300 mg, it is a 7.5% deviation. Okay, remember. Now capsule weighing, कि आजकल जो है ना, आजकल क्या हो रहा है कि कैप्सूल जो मशीन है उसके साथ में एक थोड़ा सा छोटा सा यूनिट बिठा दिया जाता है कि ऑनलाइन चेकिंग, मतलब जैसे आपका लाइन चल रहा है कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग का, उसके ऊपर एक थोड़ा सा रोटोवे टाइप और वेरिकैप टाइप का एक छोटा सा यूनिट मशीन आता है। सो दैट विल मॉनिटर द वेट ऑफ कैप्सूल ऑनलाइन इटसेल्फ, मतलब जो कैप्सूल फिलिंग चल रहा है मशीन में, उसी में फिलिंग करते करते ही ये दूसरा यूनिट उसको बैठाने का, और दैट विल मॉनिटर द वेट वेरिएशन। ओके, सो कैप्सूल वेइंग मशीन्स लाइक योर रोटोवे एंड वेरिकैप, दे विल मॉनिटर द वेट ऑफ इंडिविजुअल कैप्सूल एंड प्रोवाइड ऑटो रिजेक्शन। मतलब क्या, ऑटो रिजेक्शन ऑफ व्हाट, ओवर फिल्ड एंड अंडर फिल्ड कैप्सूल ऑन द कैप्सूल फिलिंग मशीन लाइन। मतलब आपका कैप्सूल फिलिंग मशीन अलग है, जहाँ पे आप एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल जो डाला है आपने, पाउडर डाला है, वो कैप्सूल फिल कर रहा है, लेकिन आपको कितना फिल करना है उस कैप्सूल में,
कैप्सूल में अगर 300 मिलीग्राम ड्रग फिल करना है तो उसने 300 मिलीग्राम ही फिल करना चाहिए। अगर ज़्यादा फिल किया या कम फिल किया तो वो कब पता चलेगा आपको? आप तो आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ मशीन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बॉडी कैप आता है, फिल होता है पाउडर और वो सील भी होता है। आपको कैसे मालूम होगा कि इसके अंदर उतना ही क्वांटिटी गया नहीं? ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस के लिए एक रोटो वे टाइप का एक मशीन आता है और वेरिकैप 1200 में मशीन आता है। सो दीज टू मशीन आर रोटो वे एंड वेरिकैप, they are known as a capsule weighing machine, and they monitor the weight of individual capsule during the filling process, and they provides auto rejection, मतलब अगर कोई कैप्सूल कम फिल हो गया तो उसको बाहर निकल के फेंकेगा, ठीक है, लाइन से, और या फिर कोई कैप्सूल ज़्यादा भरा है तो उसको भी बाहर निकल के फेंकेगा। इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सरे टेक्निक। एक्सरे का एक बीम छोड़ते हैं, वो अलग टेक्निक है, बाद में वो बोलता हूँ आपको, या फिर आपको पढ़ना है तो बुक में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। फॉर दैट टेस्ट you have to take 30 capsules, and out of that 10 capsules are acid by a specific method, and test passes if test मतलब content uniformity test passes if 9 out of 10 capsules are within the specified range of potency, मतलब 85% उससे कम नहीं होना चाहिए उसमें ड्रग, और एक 115% से ज़्यादा नहीं होना। सो इट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 85 to 115। इट शुड नॉट बी लेस देन 85%, इट शुड नॉट बी मोर देन 115%। ओके, एंड जो 10th टैबलेट है वो भी कम से कम, अगर 9 टैबलेट इसमें रेंज में आ गया और 10 टैबलेट इसके रेंज के बाहर गए तो उसका क्या लिमिट है? इट शुड नॉट बी लेस देन 75% और इट शुड नॉट बी लेस देन 125%। मतलब एक टैबलेट अगर थोड़ा बहुत इसके बाहर है ये रेंज के, टॉलरेट हो सकता है, लेकिन वो टैबलेट इसके रेंज में तो जाए कम से कम। आर यू गेटिंग और नॉट? नाउ disintegration time. Hard gelatin disintegration time is, you know that what is disintegration time. Okay, so for hard gelatin capsule it should be 30 minutes, it should not be more than 30 minutes, and for soft gelatin capsule it should not be more than 60 minutes. इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 मिनट, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 60 मिनट, याद रखो। नाउ वेज वेज कैप्सूल्स मैंने क्या बोला था, अल्टरनेटिव टू जेलेटिन। जेलेटिन क्या होता है? जेलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम animal skin, bones. Okay, so sometimes what happens, those who are strictly vegetarian, they will not accept that gelatin capsule. So for that, veg capsules are under the मतलब वेज कैप्सूल भी आप बना सकते हो। वेज कैप्सूल कैसे बना सकते हो? सो यूजिंग ए सेलुलोज पॉलीमर्स, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, उसका भी आप ये बना सकते हो, एम्प्टी कैप्सूल बना सकते हो। सो अल्टरनेटिव टू जेलेटिन, HPMC is there, then HPMC is there also, starch is there also, then dextrins are also there. So alternative to gelatin, HPMC capsules are there. So it will have around moisture content of 2.5% moisture content होता है उसमें। देन स्टार्च कैप्सूल भी होता है, एक्चुअली स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट में स्टार्च कैप्सूल होता है और उसमें 10 to 14% मॉइस्चर होता है। देन उसके बाद में क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रान कैप्सूल भी आता है। सो दीज आर द वेज कैप्सूल। ओके, बाकी प्रोसेस वगैरह सेम ही है। नाउ फिलिंग ऑफ कैप्सूल। ओके, filling of your powder blend or drug in the capsule. What are the steps involved? So I'm not going to take in detail, so just names of step. Rectification means वहाँ पे जहाँ पे आपने कैप्सूल डाला है मशीन में, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल डाला है मशीन में तो क्या करेगा मशीन, तो उसका बॉडी अलग करेगा और कैप अलग करेगा, और वो बॉडी में क्या होगा, फिलिंग होगा, और बाद में क्या होगा, वो कैप उसके ऊपर अटैच होगा। सो रेक्टिफिकेशन मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ all the bodies in the same direction in the capsule machine. So that is the rectification process. Then separation of body and cap is rectification मतलब क्या कि जो कैप्सूल डाला है आपने वो सब कैप्सूल फिट होगा और एक ही डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप।
So for the separation, vacuum is applied, and based on that, body and cap can be separated. मतलब एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल शेल जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक तो बॉडी होता है और एक तो शेल होता है. जो बॉडी होता है वो ज़्यादा लंबा होता है और शेल जो होता है वो शॉर्ट होता है. मतलब जो शेल मतलब एक सॉरी बॉडी जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है और कैप जो होता है वो शॉर्ट होता है. कैप बॉडी के ऊपर अटैच होता है. ठीक है. तो रिमूव कैसे करेंगे, कैप एंड बॉडी रिमूव करेंगे, बाद में ही उसको फिल करेंगे. ठीक है. सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप, फॉर सेपरेशन वैक्यूम इज यूज्ड. देन डोसिंग एंड फिलिंग, मतलब you have to fill the particular amount of powder in that. Okay, so that is already programmed in the machine. Then joining and collection, joining of cap and body and then after that collection. उसके बाद में उसका स्ट्रिप पैकेजिंग होता है. ठीक है. Now machines related to capsule operation, this is very important and इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So first one, rotoway. Rotoway as the name indicates, it's a weighing machine. So rotoway and vericap 1200, both these two machines are the weighing machines. So they are attached with the capsule filling machine to reject the overfilling and underfilling capsules. So capsule filling machine measures the this is a rotoway. This capsule filling machine measures the weight of capsule by refracted energy. Okay, by backscattering. X-ray beam is used in this machine to measure the weight of capsule on the line. मतलब जो टैबलेट फिलिंग कैप्सूल होता है उसके उसमें ये मशीन भी टाइप होता है ताकि आपका अंडर फिलिंग ओवर फिलिंग ना हो. Then vericap 1200 is also a weighing machine. It measures the changes in the dielectric constant and capacitance capacitance variation. जो कैपेसिटेंस और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वेरिएशन होता है उसके बेसिस पे ये वेट मेजर करता है. आप इतना याद रखो, बाकी डिपेंड जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और इतना याद रखो कि रोटोवे एंड वेरिकैप दे आर अ कैप्सूल वेइंग मशीन. नाउ यूरेका किया. So यूरेका किया is the polishing machine. polishing machine, it is a polishing machine. फिलिंग मशीन जो है वो मैं बोलता हूँ. ठीक है. So यूरेका किया is the capsule polishing machine, de-dusting and polishing machine. याद रखो. Now rotofill is a filling machine. As the name indicates, fill means filling. So rotofill is a capsule filling machine, powder capsule में भरना. ठीक है. So from the Eli Lilly कंपनी बनाती है उसको रोटोफिल को. So and it is a capsule filling machine. It is a filling machine for pellets in the capsule. ये pellets कैप्सूल में फिल करने के लिए रोटोफिल बनता है. ठीक है. रोटोफिल नाम का जो कैप्सूल फिलिंग मशीन है वो किसके लिए, फिलिंग ऑफ pellets in the capsule. Now Acofill, it is a model based on the paper industry and it will fill powder into capsule. So ये important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So Acofill क्या करेगा, कैप्सूल में पाउडर भरेगा. रोटोफिल क्या करेगा, कैप्सूल में पेलेट्स भरेगा. देन ये भी एक नया मशीन है, सीन डिनाइटर. वो क्या है, इट इज आल्सो पॉलिशिंग मशीन, कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन. सीड डिनाइटर प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा, याद रखो उस मशीन को. नाउ कैप्सूल साइज एंड देयर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम और वेट. नाउ आपने एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल बना लिया, लेकिन आपको क्या मालूम वो कि उसका साइज उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ पाउडर बैठेगा, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड बैठेगा. सो उसका कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है. रिक्वायर्ड डिजायर्ड साइज उसको ट्रिम करना पड़ता है. डिफरेंट कैप्सूल साइज एंड इट्स ये अभी सबसे ज्यादा साइज वाले कैप्सूल होते हैं 10, 11 and 12. So these three, capsule number 10, 11 and 12. Remember, try to focus on my words and this mouse. This is very important. Now capsule number 10, 11 and 12. These are not used for humans. They are for veterinary use. Capsule number 10, 11 and 12. ये वेटरनरी यूज के लिए होते हैं, क्योंकि वेटरनरी में क्या होता है कि जो गाय भैंस है, आपका गाय है, जो बैल है, वो तो अपना छोटा टैबलेट या छोटा कैप्सूल तो नहीं खा सकते, तो उनके लिए बड़ा लगता है ना, बड़ा बड़ा कैप्सूल लगता है. ठीक है. तो कैप्सूल नंबर 10, 11 and 12, these are for veterinary use. So capsule number 10 will have 30
ml. It can occupy 30 ml your liquid. Capsule number 11 will occupy to 15 ml of liquid. Capsule number 12 can fill up to 7.5 ml of liquid. इसमें कितना liquid बैठेगा? Capsule number 10 में. Human use के लिए कौन से होते हैं? What are the capsules? Those are used for humans. So capsules like 000, 000, 1, 2, 3, 4, 5. तो इस रेंज में आपका कैप्सूल इसमें होता है ह्यूमंस यूज के लिए. You can see in my hand. It is one of the model. So capsule will look like this. Actually this is a model for enteric capsule, enteric coated capsule. So मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आउट ऑफ सिलेबस है. जब आप इसको खोलेंगे, तो उसमें से ये देखो इसमें क्या निकला, इसमें निकला है ये बॉल. तो ये एक्चुअली ये डेमो है, ये बॉल निकला है. अभी ये बॉल भी खुलता है और इसके अंदर भी एक छोटा सा बॉल है. मतलब इट इज अ कैप्सूल विथ ग्रेन्यूल्स. ये जो कैप्सूल है इट इज कैप्सूल विथ ग्रेन्यूल्स. ओके, एंट्री कोटेड ग्रेन्यूल्स. मतलब ये जो एक ग्रेन्यूल्स बोल सकते हो आप, ग्रेन्यूल है इसको भी खोलेंगे तो अंदर छोटा ग्रेन्यूल निकलेगा. इट इज जस्ट capsules for human use. Now it's the product. So 000 is the largest capsule जो अपने यूज के लिए होता है ह्यूमंस के लिए. उसमें कितना कैप्सूल होता है? कैप्सूल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 000 to 5. ये जो है वेटरनरी के लिए. So कैप्सूल नंबर 000 is the largest one and it can occupy around 1.3 ml of liquid and 950 to 1 gram of drug. It is the largest. Now 00 will occupy 0.9 ml of liquid. It can occupy 650 milligram to 760 milligram of drug. Number 0, capsule number 0. So it is the most commonly used because this capsule number 0 will occupy a dose of drug around 500 milligram. Okay. So capsule number 0 will occupy 0.75 ml of liquid and it can occupy, it can fill 450 milligram of to 545 milligram of drug. And you know that most of the drug will have a dose in range of this 500 mg, and that's why this is the most commonly used. Capsule number 0. So largest capsule is capsule 000. Smallest is capsule number 5. Okay. Now capsule number 1 will occupy 0.55 ml of drug, 5.55 ml of liquid. It will occupy drug in the 300 milligram. Okay. Capsule number 2, it will occupy 0.4 ml of your liquid and 250 milligram of drug. Capsule number 3 will occupy 0.3 ml of your 0.3 ml of liquid and it will occupy 200 milligram of drug. Capsule number 4 will occupy 0.2 milligram 0.25 ml of liquid and it will occupy 150 milligram of drug. Capsule number 5 is the smallest capsule. It will occupy 0.15 ml of volume of liquid and it will occupy 100 milligram of drug. याद रखो आप 3 for 3, ये याद रखो. 3 capsule number 3 will occupy 0.30 ml of liquid and 200 mg of drug. और इसमें आपको क्या याद रखना है? लार्जेस्ट कैप्सूल कौन सा है? 000 कैप्सूल नंबर 000 is largest one and it can occupy up to 1 gram of drug and or 1.37 ml of liquid. Then 0 is the most commonly used. It can occupy up to 500 mg और 545 mg. ठीक है, 0.75 ml. ये याद रखो थोड़ा सा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है और मोस्टली यूजफुल कौन सा है, ये याद रखो. स्मॉलेस्ट है कैप्सूल नंबर 5, लार्जेस्ट है कैप्सूल नंबर 000 और मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है ह्यूमंस में? कैप्सूल नंबर 0. Actually this capsule number 10, 11, 12 they are not for human use, they are only for veterinary purpose. ये आपको मोस्ट ऑफ द बुक में नहीं मिलेगा. मैंने 2-4 बुक छान के इसको निकाला था. Now so last slide. Now this is known as a rotary die process for manufacturing of सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल. कि इसमें क्या है, देखो जेलेटिन टैंक यहाँ पे दिखा है. जेलेटिन टैंक में क्या होता है, यहाँ पे जेलेटिन का सॉल्यूशन होगा. तो जेलेटिन का सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, यहाँ पे ड्रम होगा जहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट होगा. तो जैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा ये ड्रम के ऊपर, तो ड्रम कूलिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा उसका और यहाँ पे बनेगा शीट्स. ठीक है, यहाँ पे बनेगा जेलेटिन शीट्स. ये देखो जेलेटिन शीट यहाँ से एक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक जा रहा है. ऐसा ही अरेंजमेंट या इधर के साइड पे भी होता है.
यहाँ से भी एक जिलेटिन शीट आएगा। नाउ यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मटेरियल टैंक, मतलब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए कि आपको यू आर प्रिपेयरिंग ए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ऑफ योर कोल्ड लिवर ऑयल, या फिर आपका लिपिड सोल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई का सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी देयर इन द, यहाँ से एक रिबन आएगा, यहाँ से एक रिबन आएगा, यहाँ पे यूनियन होगा उनका, यहाँ पे कटिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो फिल होगा उसमें, ये वो नीचे आएगा। ये क्या है, ये देखो, कैप्सूल फिल्ड विद द लिक्विड, कैप्सूल फिल्ड विद योर सॉल्यूशन, ये होगा विटामिन ई का कैप्सूल है। बाद में इसको कटिंग हो जाता है नीचे, और कैप्सूल बाद में कन्वेयर बेल्ट पे आ जाता है, और बाद में यहाँ से लेके कन्वेयर बेल्ट से बाद में जाएगा पैकिंग मशीन को। सो इट इज जस्ट हाउ, सो ऑल द प्रोसेस इज देयर इन अ वन ओनली, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन, फिलिंग, सीलिंग, each and every step is just done in a one step process. So that's why rotary dry process is the process for manufacturing of a soft gelatin capsule. But in case of hard gelatin capsule, आपको क्या होता है वहाँ पे, each and every process is different. You have to make a hard gelatin capsule in a different step, then you have to fill on a different machine, then filling and sealing is done in the same